जय जगन्नाथ वेलकम टू मिट्स ओडिया समस्त सेसन को स्वागत दुखर सहित कह पड़े आम किसी दिन तले गोटे सेसन आरंभ करते जो आम पार्ट 1 देखते यार ऑब्जेक्टिव पार्ट अबे अबे आम तार सब्जेक्टिव पार्ट गुड़ा करवा दुई नंबर क्वेश्चन गुड़ा ओके सो आम देखा एवं दुई ए आमर ये क्वेश्चन रही द एंड प्रोडक्ट इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन Rx gives rise to Rx when react with KCN Rx को जितने आम KCN सहित अल्काइल हालाइड को जितने आम KCN सहित माने हाँ KCN सहित रिएक्ट करछे कौन होची फर्दर KCN को जितने आम रिएक्ट करछे NaOH एंड वाटर सहित व्हाट इट गिव राइज टू सो फर्स्ट हम देखिबा Rx when react with KCN Rx when react with KCN it gives rise to RCN so A होबो अल्काइल सियानाइड बा अल्काइल नाइट्राइल and B होबो तुम्हारा कौन B होबो जेहेतु NaOH वाटर रही so it will be RCOH माने बेस हाइड्रोलिसिस so it will be base hydrolysis okay next question देखिबा then we will move to next question अच्छा हमारा कौन ना the conductivity of N/10 solution at 20 degrees Celsius this one and the resistance of the cell is this one calculate the cell constant so conductivity माने हमारा रही kappa बहुत easy question kappa is equal to kappa is given as how much it is kappa is equal to 0.0212 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और रेजिस्टेंस होची हमरो 55 ओम हम पचराई सेल कांस्टेंट सो सेल कांस्टेंट पे हमर फार्मूला होची kappa is equal to what is the formula of kappa is equal to 1 by r into l by a right kappa is equal to 1 by r into l by a so l by a is equal to how much that is kappa multiplied by r kappa is equal to 0.0212 multiplied by 55 you have to calculate here 0.0212 multiplied by 55 मैं ये कैलकुलेटर पिला माने यूज करछि कारण एग्जाम माने क्वेश्चन को इजी टाइमली सॉल्व करियार छै बहुत क्विकली सॉल्व करिया पे मैं कैलकुलेटर यूज करछि बट एग्जाम रे कैलकुलेटर अलाउड नहीं सो एटा 1.166 आसिला सेंटीमीटर इनवर्स so the answer comes as 1.166 centimeter inverse or 1.16 centimeter inverse okay so this one is our L by A asigala 1.16 centimeter inverse next question how is acetone react with dilute NaOH सहित acetone reaction माने aldol condensation रे कोन होबा ना CH3CO रहिछि so let it be CH3CO CH2 bond H alpha हाइड्रोजन बाहर कर देली पुणी एटे कोन कर देली CO CH3CO ताले दि जन को फर्दर रिएक्ट करेले what it will gives rise to it will gives rise to CH3CO then CH2 C एटा हे जो OH CH3 so it will give rise to this compound what is the name of the compound a compound ର नेम जदी होबो ताले कोन ना 1 2 3 4 5 so 4 methyl 4 hydroxy pentane 2ON एटे तुम्हें नेम न लिखले भी मार्क मिल जिवो 2 मार्क ना एटे नेम न लिखले भी मार्क मिल जिवो तापर नेक्स्ट कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 1.02 N/10 सॉल्यूशन सो मास केते पचराई छि एवं वॉल्यूम ऑफ the solution is volume is equal to 2 liter right 2 liter ଆଉ ଆମର normality ରହିଛି 1.02 normality is 1.02 normality ଆଉ क्वेश्चन रे कोन रहिछि ना mass of NaOH पचराइछि mass of NaOH माने W केते पचराइछि
सो जदि हम देखा फॉर्मूला अनुसार कौन ना नॉर्मालिटी इज इक्वल टू W/E इंटू 1000/V W/E इंटू 1000/V नॉर्मालिटी फॉर्मूला सो नॉर्मालिटी माने 1.02 इज इक्वल टू W हमर जाना नहीं इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH होची मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1 सो 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय V होची हमर 2 लीटर माने 2000 ml so 2 1/2 1/80 हैला so W is equal to how much now 1.02 multiplied by 80 1.02 multiplied by 80 तो सॉल्व कले याकू डायरेक्ट हमें पेन एंड पेपर सॉल्व कर दे परिबा 2 16 8 2 16 8 1 8 so 8.16 into 10 माने 81.6 ग्राम so आंसर आसीबो 81.6 ग्राम so it will be 81.6 ग्राम तथापि जोडी कहार किसी डाउट रोची बा भूल रोची बोली अनुभव को कहबो एंड करेक्शन भी करी ही जो काहे ना टिके हमर जेत बॉयस हलानी टिके बेले बेले भूल भी हे जाय calculate the equivalent conductance of propionic acid at infinite dilution if the equivalent conductance of NaCl HCl sodium propionate are this respectively so एडा कोलोरेस लॉ क्वेश्चन कौन रही क्वेश्चन रे ना calculate the equivalent conductance of propionic acid at infinite dilution if the equivalent conductance of NaCl HCl and sodium propionate means CH3CO C2H5CONA NaCl HCl then C2H5CONA sodium propionate all these are given what are the values the corresponding values are 1 to 6.45 4 to 6.91 4 to 6.16 so 26.45 then 4 to 6.16 and this one is 91 ohm unit मु लेखुनी आउ unit किंतु सबुडा लिखिबो unit हमर जो देखिबा unit एटे केते रहिछि 91 so it is 46.15 ohm inverse centimeter square gram equivalent inverse ohm inverse centimeter square gram equivalent inverse same unit हला ताले एटा हम पचराइछि प्रोपियोनिक एसिड रो केता हो so lambda naught propionic acid C2H5COH is equal to how much हमको देखिया पड़ियो कोको आयन ना एटा को इक्वेशन 1 एटा को इक्वेशन 2 एटा को इक्वेशन 3 देली मु देखिली जे Na आउ सॉरी एटा Na आउ HCl मिसिले मते H दरकार आउ Na C2H5CO पार्ट दरकार एदिडा 2 और 3 रे अछि सो 2 + 3 - 1 कर देली 2 + 3 - 1 equation 2 + 3 minus equation 1 ताले 2 + 3 माने 4 to 6.16 plus 91 minus 1 to 6.45 कर दोची एटा जेतो 2 मार्क केती करले मार्क मिली जीवो सो 0.16 6 1 7 2 9 11 11 के देखना 1 4 5 6 1 7 2 9 11 11 4 5 minus 1 to 6.45 सॉल्व कले केता बस 16 6 5 ले 1 देन 10 रु 4 गले 6 तापर 6 रु 6 ले 0 8 480 ना 1 5 6 6 1 5 6 6 4 10 1 11 1 6 7 बस ना एटा 9 हो 9 2 1 4 बस गुड मॉर्निंग तपक so एटा हबो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हला दिस वन इज द राइट आंसर फॉर एसिटिक एसिड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा For a zero order reaction, the reactant concentration decreases from 0.8 to 0.4
4 mole in 15 minutes. What is the time taken for change in concentration for 0.1 to 0.025? So 0.8 to 0.4 in 15 minutes. 0.8 to 0.4 in 15 minutes. মানে 0.4 divided by 15 minutes. এটা হচ্ছে 0.8 minus 0.4 divided by 15 minutes. এটা হচ্ছে rate constant of the first case. Then second case রে আসছি কোন, what is the time taken required for change in concentration from 0.1 to 0.025? So 0.1 minus 0.025 divided by t. 0.1 minus 0.025 divided by t. और তাহলে আমার কারণ k is equal to x by t. দিট যার রেট কনস্ট্যান্ট সেম রইব। সো এটা কেতে আসিব নাও গোটে দিন রইলা তখন সেটা আসিব 0.4 divided by 15. This one is how much? এটা আসিব 57 0.075 by t. So t is equal to 0.075 multiplied by 15 divided by 0.4. 0.075 multiplied by 15 divided by 0.4. So it is 2.8125. So it is 2.8125 minutes. 2.81 minutes. Second रे जे कन्वर्ट करथिबो से कोन हबो t 15 जगह रे 15 into 60 करिवो. सेकेंड रे जे कन्वर्ट करथिबो आ अकॉर्डिंगली सॉल्व करले आसीबो तार आंसर. नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी. ऑर्डर कौन होची? ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा जाए. मॉलिक्युलरिटी थियोरेटिकली. ऑर्डर कैन बी जीरो or fraction, but molecularity cannot be. Order of a multi-step reaction is basically, for a multi-step reaction order will remain same, but for a multi-step reaction the molecularity becomes different. ठीक है. Then order and molecularity रा आउ कौन रही? order definition, molecularity definition. So हम चारिटा कहली Ne2 लिखिले हला. Lanthanum 3+ and lutetium 3+ are colorless, whereas samarium 3+ and uranium 3+ are colored. Why? कारण lanthanum 3+ और lutetium 3+ रे कौन है? fulfilled रही, because they have fulfilled or half-filled electron configuration. half माने f रे electron नहीं, there is no f electron, so ff transition is not possible. ff transition है परिबनी lanthanum 3+ lutetium 3+ रे, but samarium 3+ europium 3+ रे ff transition है परिबो possible. That's why it is colored and that's why it is discolored. आउ चाहेले ताको आउरी डिटेल्स में लिख परिबो. नेक्स्ट, identify A and B. Sorry, next question होची A and B formed from the reaction. So C3H7COH माने प्रोपानॉल को PCl5 से रिएक्ट करले कोन दबा? that is C3H7Cl. so A is C3H7Cl and further ताको जेतबेले अल्कोहलिक KOH सहित ट्रीटमेंट करबा माने एठी एलिमिनेशन हो जिवो. अल्कोहलिक KOH माने एलिमिनेशन करैबो. एलिमिनेशन करेले इट विल बिकम एज C3H7Cl रहिछि ना. सो इट हे जिवो हमरो CH3 bond CH double bond CH2. so we will get corresponding propene plus HCl, sorry, plus KCl plus water. so leave it. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि C2H5Br KCN से रिएक्ट करिवो कोन हबो? इट विल गिव्स राइज टू C2H5Cn. फर्दर हाइड्रोलिसिस कले इट विल गिव्स राइज टू C2H5COH प्रोपानॉल एसिड. देन CH3MgBr methyl magnesium bromide magnesium ether से ट्रीटमेंट कले there will be no reaction, so it will remain same CH3MgBr. ताको फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कले corresponding acid दबा, that is acetic acid CH3COH plus MgOH Br. so
A will be same as per the reaction. Why aniline is less basic than ammonia? Because in case of aniline, Janmanjay, which question? Please tell me the question number, because otherwise बहुत सारा question discuss करी जाउछि ना. So please tell me the question number. रिमिक्स तो सार वर्तमान तो केमिस्ट्री एग्जाम रो एडा हेइनी, तेणु एडा डिस्कस हो जाउछि. आ आज एमआईएल रो क्लास रहिछि इवनिंग रे 5टा बेले एमआईएल रो क्लास रहिछि. सो प्लीज बी प्रेजेंट फॉर दैट. Pranam Himrasmi. Oh, thank you Himrasmi for your presence. I thought you might be busy in practicing Odia, because Odia exam अछि. मु काहा को भी प्रेशराइज कलेनी, काहा को କିଛି कहलेनी. एटा बहुत लेट हे गलानी. क्लासटा बहुत अर्ली करिवार थिला आ रिजल्ट भी पब्लिश हे पलानी, तेणु टिके टाइम लागुचे. अभी सर 4टा हबो ना, 4टा बेले हबो. अच्छा 4टा रो 6टा अछि. ठीक अछि, 4टा रो 6टा भूल कली. 5टा रो 7टा 4टा बेले क्लास हबो. एमसीक्यू क्लास करबा. ठीक अछि. आपरे इंग्लिश क्लास होछि. अच्छा चलो जी, ठीक अच्छे. रश्मि नो इशू, क्लास चलो. नो इशू, क्लास चलो. इंग्लिश इज इम्पोर्टाट. यहाँ जस्ट आमर डिस्कसनटा कहीं यहाँ मोर हो नाला, तेणु यहाँ डिस्कसन कर. ओके मीट रे, गूगल मीट रे आज जॉइन कर जो क्लास हम. ठीक अच्छे. वाई एनिलिन इज लेस बेसिक देन एमोनिया? कारण एनिलिन रे रेजोनांस होची. रेजोनांस हवा द्वारा, ड्यू टू रेजोनांस द delocalization of electron will decrease the electron density on nitrogen atom, and due to decrease in electron density on nitrogen atom, the basic strength of aniline becomes quite less than ammonia. This is the warning. So you can note it down. Next, discuss Jupiter ion structure and amphoteric behavior of amino acid. Jupiter ion structure माने basically it possesses both the character. So R CH2 CH, so let it be your COH, and it is NH3. So NH2. This one is the amine, right? This one is the amine, amino acid. Amino acid रा further जब हम देखिबा Jupiter ion structure रे कोन जो CO minus NH2 plus, CO minus NH2 plus, NH3 plus. So NH3 plus is basically showing its basic character, कारण H plus accept करुछि. CO minus is your acidic character. ठीक अछि, H plus loss करुछि. So as a result, this is amphoteric in nature, that is both acidic and basic. तापर हमर थिला एडे क्वेश्चन रे भूल अछि. Ni2 लिखा अछि, Ni7 हबो. Ni7 हबो, सॉरी एडा Ni7 of the following. 2 कल हबनी, Ni7 हबो. Ni7 अनुसार प्रथम क्वेश्चन अछि, बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल व्हिच वन इज मोर एसिडिक? हम जो देखिबा कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक. काहे ना, ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक. काहे कि कार्बोक्सिलिक एसिड रे तुमरो कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रही. कार्बोक्सिलिक एसिड हैज कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो ये तुमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करिया पड़ियो. बट फिनॉल रे, फिनॉक्साइड आयन रे कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाही. दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन. हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन रही जो गुडा वार्डिंग वाला क्वेश्चन ताको मु एभला कहि कि सारी दोछि, कारण मु बेसी टाइम नेबिनी. तम मानकर एग्जाम एबे पाखा पाखी, तेणु आपको जेहेतु यहाँ पेंडिंग रही है किसी पिलांगर माने रिक्वेस्ट थिला, तेणु एटाको आज जेमथिले सारी वाली होली. सॉल्यूशन contains 72% water and 22% ethanol, methanol. Calculate the mole fraction of each component. So हम जो देखिबा 72% water, किए से हाई हिमरश्मि समस्त को खाली हाई हाई दूची, किए से हाई ना कहले हो ना, हाई हाई खाली कहूँ स्टेटस. 72% जदि हम कहबा 72% वाटर प्लस 28% मिथानॉल.
72% water माने आम जदि कहबा what is the number of moles of water is ना water हमरो 72 ग्राम सपोज नबा 72 ग्राम डिवाइडेड बाय 80 कहीं 72 ग्राम नबा ना 72%। हाई हाई मारिकी तुम निद पलि आसलानी सोनू हे प्रभु की अवस्था। सोनू जाओ पानी माने मुहर पानी छाट पानी पानी कुह सी हाई हाई कहला तुम पानी पानी कुह पानी कहीकि मुहर पानी छाट पानी छाटिकी पढ़िया बस। निद जदि कंप्लीट ही नथिबो ताले सुई जाओ जदि 6 घंटा रु कम समय सुईथिबो 5 घंटा रु कम समय नाइ 5 घंटा रु अधिक समय सुईछ ताले सुओनी ताले कोन करियो जो मुहर पानी छाटियो छाटिकी बोलो पानी पानी को तापरे 72/18 ताले डा 4 मोल हबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमें देखबा मिथानॉल दैट इज CH3OH मिथानॉल रो 28 ग्राम डिवाइडेड बाय एडा हबो 12 3 15 1 16 16 32 32 तो 12 3 15 1 16 16 32 यस 32 4 रे कले 4 4 7 4 8 7/8 मोल ताले मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर केता हो ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस मिथानॉल केता आसीबो ना 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7/8 4 डिवाइडेड बाय 4 32 प्लस 7 बाय 8 39/8 so it is 32/39 mole fraction of water is 32/39 then mole fraction of methanol is how much the remaining part it is 7/39 if you write this it is quite enough just एतिक रे ही रखि देबा ताको फ्रैक्शन को सॉल्व करिया को ट्राई करबेनी कारण फ्रैक्शन को सॉल्व करिया को टाइम करले टाइम पळेबो सॉल्व करिया को जदि हम अटेम्प्ट करबा टाइम पळेबो सॉरी A compound A with molecular formula C2H5O2N on reduction with SnHCl gives compound B which when treated with sodium nitrate and dilute HCl gave compound C having molecular formula C2H6O. The compound 6C when treated with sodium metal gives effervescence and when reacts with CrO3 gives a saturated aldehyde having 2 carbon atoms. Determine the structure of ABC along with the reaction. So A raw the molecular formula देखिबा C2H5O2N on reduction with SnHCl C2H5NO2 on reduction with SnHCl gives rise to C2H5NH2 that is ethanamine. When treated with sodium nitrate and dilute HCl. Big molecular formula when it treated with sodium nitrate and dilute HCl. Yes, thank you Himarasmi. Sodium nitrate and dilute HCl. Gives rise to compound C. That is ethanol habo. बस इथानॉल हबो दिस इज C2H5OH। सत्यजित प्रणाम केमदी अछि सत्यजित बहुत दिन परे क्लास करूची तमरा C2H5OH तापर फर्दर dilute HCl gave compound C having molecular formula जेतले NaNO2 dilute HCl C2H5OH। The compound C when treated with sodium metal gives rise to effervescence and C react with CrO3 having
saturated aldehyde with 2 carbon atoms. So CrO3 सहित रिएक्ट कले 2 कार्बन एटम्स थिवार गोटे aldehyde बस दैट इज CH3CHO. या को जतले सोडियम मेटल सहित रिएक्ट करबा C2H5ONA plus H2. So आमे जो देखिबा या को A, this one is B, this one is C बस. So ABC आइडेंटिफाई करबार थला, ABC आइडेंटिफाई करके रिएक्शन एतिक लिखि देले 3 to 3 मार्क मिल जो एग्जाम रे. No need to write more things. Tapre the boiling point of benzene is this one when 1.8 gram of non-volatile solid was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point of benzene is raised to this one. Calculate the molecular mass of solute. Kb for benzene is this one. Boiling point, that is Tb. Tb is given how much? Tb is given as Tb is equal to 353.2 Kelvin and W is equal to 1.8 gram and 90 gram of benzene. So benzene hochi amara, this one is W, weight of solute, weight of solvent is equal to how much? Benzene ro weight kete rohichi, that is 50 gram. Boiling point of benzene is raised to be, ताले हमारा पहला Tb plus del Tb बा TBS. Initially it is Tb naught and this is TBS. Boiling point of solution is 354.1 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. Kb is given as 2.53 kilo Kelvin kg mole inverse. How can I calculate the molecular mass? Calculate the molecular mass of solute. So of solute हमको जाना नहीं कौन देखियार अछि. सो आमे बेसिकली मु एठे कौन करे सब बोले सॉल्वेंट को 1 रे निए और सॉल्यूट को 2 रे निए. तमे एटा को इंटरचेंज करले भी चलिबो. सो हमरो फार्मूला अनुसार जदि हम देखिबा डेल्टा टीबी प्रथम बाहर कर देबा. डेल्टा टीबी बाहर करिया पे एठे मार्क रहिन किछि अवश्य. डेल्टा टीबी होचे हमरो कोन ना टीबीएस माइनस टीबी नॉट. सो बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन देले हिमरश्मि. 354.1 minus 353.2. So solve कले केते आसीबो ना 11 2 गेले 9 0.9. So 0.9 केल्विन आसला. 0.9 केल्विन. ताल हम जे देखिबा फर्दर फार्मूला डेल्टा टीबी रे कोन होची. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी into mole fraction, right? Kb into mole fraction थिला ना फार्मूला टा मोर भी भूली छी. डेल्टा टी इज इक्वल टू Kb into Kb into molarity, right? Kb into delta T is equal to Kb into m. Molarity, right? Molarity रो फार्मूला molality of मैं भी भूल गया. डेल्टा टी इज इक्वल टू Kb into m small m. मोलालिटी Kb into small m. मोलालिटी रो फार्मूला होची कोन ना weight of solute divided by molar mass of solute into 1000 divided by weight of solvent. मो W1 होची आकु Kb जातार वैल्यू पकेबी 0.9. दिस इज 0.9 is equal to Kb रो वैल्यू होची 2.53 multiplied by W2 होची हमरा केते. W2 is 1.8. M2 जाना नहीं. 1000 divided by W1 होची केते. W1 is 50. सॉल्व कले 20 आसला परे. ताले M2 is equal to how much ना 2.53 into 1.8 into 20 माने 18 दूनी 36 3.6 into 10 माने 36 आसीबो.
36 डिवाइडेड बाय 0.9 तो सॉल्व कले 0.9 रे 0.1 एटा 4 ताहले एटा कैलकुलेशन पाटे पाटे हो जाउछि 4 3 की 12 4 3 12 2 रखी देखिना 4 5 20 21 4 2 8 1 9 9.12 into 91.2 ग्राम 91.2 ग्राम आछि कि समस्त आंसर जो माने भी करछ 91.2 ग्राम आस्तिला ना इज इट क्लियर आई थिंक सो 91.2 ही हिथियो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 91.2 तापर शॉर्ट नोट ऑन कोलिजन थ्योरी रे प्रथम कोन करबो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गुडा को परस्पर कोलाइड करबो आ कोलाइड करी समान भीतर एनर्जी एक्सचेंज हो राइट सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गुडा कोलाइड करी समान भीतर एक्सचेंज हो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जेतोल हबो समान भीतर तापर कोन हबो टू टाइप्स ऑफ कोलिजन हबो अच्छा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हेले तापर समान गोटे मिनिमम एनर्जी प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर बहुत सुंदर हमरा बढ़िया तो कोलिजन हला पर से माने गोटे ऑप्टिमम मिनिमम गोटे एनर्जी लेवल अटेन करंदी सेटा हम कोन कहबा थ्रेशोल्ड एनर्जी वंस हे गला पर तापर कोन करंदी ना जो मॉलिक्यूल गुडा का प्रॉपर वे रे अरेंज हे कि थांती से माने प्रोडक्ट देंदी जो माने एग्जैक्ट वे रे अरेंज हे नथंदी दे विल नॉट गिव रेस्ट टू एनी प्रोडक्ट ऑलरेडी क्लास रे डिस्कस हे छी यू कैन गो अकॉर्डिंग Discuss the magnetic character, catalytic activity and color found in fast transition element. Magnetic character सबुडा एलिमेंट आउ तार आयन रो देखिबो catalytic activity जदि हम देखिबा कैटलिस्ट हिसाब रे कोगुडा को कोन होची एगुडा जेतु फास्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कथा कहैची मैंगनीज और आयरन किछि किछि रिएक्शन रे कैटलिस्ट हिसाब रे यूज हुए बेसिकली गुडा को कैटलिस्ट इथि हुए जेतु मानकर अनपेड इलेक्ट्रॉन थाए तापर कलर गुडा को भी डिस्कस करिवो तीनटा पॉइंट रहिछि तीनटा पॉइंट को जस्ट पॉइंट करके लिखिबो डिटेल्स रे लिखिबा नै मैग्नेटिक दीज आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एडा लिखिबो गुड पॉइंट कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दे हैव हाई कैटालिटिक एक्टिविटी एग्जांपल दे परिबो कलर दीज आर कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन थ्रू जो एडा कलर डिटेल्स रा लिखिबा दरकार लिंकेज आइसोमरिज्म और एम्बिडेंट लिंगान कोन विथ एग्जांपल लिखिबा अछि एम्बिडेंट लिंगान विथ होची तुम्हारा cyanide and NC these are एम्बिडेंट लिंगान when carbon is the donor atom this is known as cyanide when nitrogen is the donor atom this is known as isocyanide isocyanide आ जेतेबेले कोन होय ना जेतेबेले तुम्हारा when two different ambidextrous ligands are attached in a compound then it will gives rise to linkage isomerism setawala haba for example हम देखिबा K4APCN6 this will gives rise to your compound that is your cyanide ligand से तो linkage हेतिबो again another is K4FeNC6 तुम जहां भी नहीं परिबो लिंकेज आइसोमरिज्म एम्बिडेंट लिगैंड एग्जांपल तीन जगह पे पॉइंट अछि तीन जगह न लिखले मार्क मिलबो ना तापर हम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक कंपाउंड A that is having molecular formula C7H6O has a smell of bitter almonds on reaction with concentrated NaOH give a compound A and compound B on oxidation with pyridinium chlorochromate gives compound B. Compound B gives compound A. On heating sodium salt compound C it gives rise to benzene. How identify ABC? Question ही बुझिबोनी अगर जीवा A पाखु A रे कोन कहछि A होछि C7H6O
ताको रिएक्ट कराउची NaOH सहित कंपाउंड बी दबो with molecular formula C7H6O2 माने एडा aldehyde हेतिबो aldehyde और कीटोन एडा कार्बोक्सिलिक एसिड हेतिबो आउ किछ उपाय नै तापर फर्दर ऑन ऑक्सीडेशन विथ pyridium chlorochromate compound B gives again compound A क्वेश्चन रे गड़बड़ छै ना ठीक अछि पीसीसी सहित तोला हम पुणे ये करिवा इट विल गिव्स राइज टू कंपाउंड A again a question na bujhoni this is not a right question so it will say grace mark there will be grace mark a grace mark paiva there is no this is not the right question no this is not the right question भूल भाल अछि एठी क्वेश्चन ता कोन भी मु धरि परनी क्वेश्चन में भी एमदी थंदा A gives rise to माने organic compound हाँ on reaction with concentrated NaOH compound A gives compound B on oxidation again gives rise to compound C on heating with sodium salt it gives rise to sodium salt of compound C gives benzene on heating with sodium salt कारण कंपाउंड सी विषय किसी कहने सो दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट सो एट ग्रेस 3 मार्क पाइबो जो माने भी अटेंड करथियो बट जो माने अटेंड करनथियो दे विल नॉट गेट एनी मार्क हाउ इज मिथाइलामाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्रोमीथेन एंड एसिटामाइड सेपरेटली नाइट्रोमीथेन एंड एसिटामाइड नाइट्रोमीथेन माने CH3NO2 और एसिटामाइड माने CH3CONH2 सेपरेटली केमदी दीड जार प्रिपरेशन देखिबार अछि नाइट्रोमिथेन रो हम केमदी प्रिपेयर कर परिबा नाइट्रोमिथेन रो हम कोन प्रिपेयर करबार अछि मिथानामाइड राइट एडा हॉफमैन ब्रोमोमेट रिएक्शन सो एडा मु कोन करबी SnHCl बहुत सुंदर आंसर रिडक्शन हबो बहुत बढ़िया हिमरश्मि आउडे हमें कौन नहीं परिवा हॉफमैन ब्रोमोमेट रिएक्शन केबीआर एंड aqueous NaOH राइट हां हॉफमैन ब्रोमोमेट रिएक्शन तो वो भी बोलियो ले CH3CONH2 दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमेट रिएक्शन राइट amide amine acid this is हॉफमैन ब्रोमोमेट रिएक्शन Br2KOH
and you will get here KBr plus K2CO3 plus water. Details reaction न लिखले भी चलियो. एसिडामाइड रो एपटे भी देले हबो NaNO3. सोडियम आजाइड देले भी हबो. सोडियम आजाइड भी हेरियो. You are right. Smith reaction. Understand? बहुत सुंदर. This Smith reaction. It is quite सेटा बहुत important as compared to Hofmann-Bromonoid reaction. Reaction with sodamide is quite important. So it have answer. तमे जेकोनसी रिएक्शन लिखले हबो एटा रिएक्शन रो. तापरे हाउ इज मिथाइलामाइन हला. Name the diseases caused due to deficiency of vitamin A, C, D, E, K. At least गोटे vitamin रो कोन माने deficiency रे कोन disease हुए ताको नियति लिखिथिबो. लिख देले तुमको एटी फुल मार्क मिलिबो. तो vitamin A रो deficiency रे हमर कोन होची. vitamin A रो deficiency रे हमर ये होची तुम्हारा night blindness. vitamin A that is known as your vitamin A को हमें को रेटिनॉल रो एब्सेंस रे होय कोन नाइट ब्लाइंडनेस जेरोथैलामिया ए सब डिजीज हुए. तुम ACDE के लिखि दो छी. एटे ACDE एक को जे रेटिनॉल हला. रेटिनॉल यार डेफिशिएंसी रे नाइट ब्लाइंडनेस हुए. एटा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो मोर सहज रे मन रहनी. और जेरोफोबिया हुए. जेरोथैलामिया हुए. इवन जेरोसिस भी हुए. स्क्रीन ड्राई पूरा. और जेरोथैलामिया माने आखि को स्पष्ट न देखा जीव. और विटामिन सी को आस्कॉर्बिक एसिड. बहुत सुंदर हम रश्मि आंसर ठीक दिचंदी. आस्कॉर्बिक एसिड जोड़ा कि तमर लेमन आउ साइट्रस सब्सटेंस रे थाए. यार जदि हम देखिबा स्कर्बी जोड़ा कि जॉइंट पेन यार डेफिशिएंसी रे स्कर्बी थाए. विटामिन डी को हमें कहबा कैल्सीफेरॉल. आधार आरंभ लाई स्टेटस दी हाई खाली कहूची. आधार हम पहला हाई मारियो पड़े. कैल्सीफेरॉल रो माने विटामिन डी रो एब्सेंस रे कोन हुए रिकेट्स रे तुम्हारा कौन हुए. गोड़ गुड़ाक बंका जाए धनुष टंकार बढ़ा जाए. देन विटामिन ई होची तुम्हारा टोकोफेरॉल. अल्फा टोकोफेरॉल से पिला मो स्टेटस जी होची खाली हाई हिमारश्मि हाई ये रश्मि खाली हिंदी कहूची ना था किसी नहीं टाइम वेस्ट करची. सो इटा कौन करूची ना तुम्हारा इट कैन damage to reproductive system. तमे खाली हाई कहले कौन हबो स्टेटस तम ना कौन किछि कहून. विटामिन के रो डेफिशिएंसी रे कौन होची ना तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग हुए नी. ब्लड ब्लीडिंग होबा लगे क्लॉटिंग हुए नी ए सब डिजीज. अब नेक्स्ट हम देखिबा डाउन द व्हाट आर द लिंकेजेस फाउंड इन सुक्रोज माल्टोज गैलेक्टोज. टॉक्सिक 777 रो मु अबे तमरा टॉक्सिसिटी पूरा कटे दोची. टॉक्सिक 777 ना कहला टॉक्सिक 777 रो. ଆଉ ହବନି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ହବନି ଏଇସବୁ ପାଠ ଭିତରେ ହାଇ ଟକ୍ସିକ୍ 777 ଏସବୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ହବନି ବସିଥିବ। ତ ଗଲା ନେକ୍ସଟ
linkage found in sucrose, maltose, galactose. So हमको बाहर कर रही सुक्रोज रे को प्रकार लिंकेज रही माल्टोज रे को प्रकार गालाक्टोज रे को प्रकार. सो हमर सुक्रोज रे जदि हम देखिबा सुक्रोज रे हमर जो लिंकेज रही दैट इज योर अल्फा बीटा लिंकेज राइट. सो दिस अल्फा बीटा लिंकेज सुक्रोज रे जस्ट केवल लिखिले मार्क मिलिबो. अल्फा बीटा लिंकेज इज फाउंड इन सुक्रोज. And in case of maltose, what is the linkage? That is alpha alpha linkage. Alpha alpha linkage. And in galactose, that is beta beta linkage. Galactose रे it is beta beta linkage. No, this is also alpha beta linkage. Maltose is equal to glucose plus right. सुक्रोज होची तुम्हारा 2 moles of glucose, गोटे होची अल्फा डी ग्लूकोज आ गोटे होची बीटा डी फ्रुक्टोज. आ माल्टोज होची तुम्हारा कोन माल्टोज होची तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज अगेन अल्फा डी ग्लूकोज दीटा अल्फा डी ग्लूकोज मिशन दे जेतले माल्टोज होंदे. आ गैलाक्टोज कोन होई गैलाक्टोज होई तुम्हारा बीटा डी galactose alpha D glucose मिसिंग तुम्हारा lactose दे एटा भी lactose हो not galactose lactose हो and alpha beta किंतु lactose हो beta alpha sorry this is known as your beta alpha even alpha beta को भी कुछ होता है but it is lactose not galactose. so it भी तुम्हारा पाइबो grace 1 mark जो माने भी एटा लिखतिबो grace 1 mark पाइबो कारण तीनटारू गोटे पार्शियली इनकरेक्ट अच्छी क्वेश्चन रे गैलाक्टोज रही जाइछि लैक्टोज रहा बदल रे. नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन. ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन कौन डिफरेंशिएट के कर परिबो ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन रो डिफरेंस. ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन डिफरेंस. So globular proteins are soluble in water, acid and alkali, whereas fibrous proteins are insoluble in water. Globular proteins are highly branched, cross-linked, whereas fibrous proteins are singly branched, highly branched in nature. Then globular proteins are found in hormones, albumins of egg, hemoglobin, antibodies, etc. That is all enzymes. Whereas fibrous proteins are found in hair, then nails, wool, silk, feather, etc. एबोला लिखिबो ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा हाउ इज एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड. रोजेनमोंड रिडक्शन रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड रो एसिटाल्डिहाइड कौन ना CH3COCl when react with PDABSO4 over hot xylene produces CH3CHO acetaldehyde. When it react with tolerance reagent that is AgNH3OH it produces silver mirror daba plus CH3COO NH4 etc. 2Ag plus CH3CO NH4 plus ammonia plus water. Next, arrange the following compounds towards nucleophilic tolerance reagent and phenyl hydrogen. Phenyl hydrogen से तो react कले CH3CHO when react with phenyl सबुडा वार्डिंग न लिखले मार्क किछि मिलबोनी. phenyl hydrogen माने NH2NH C6H5 so H2 की पळेबो so it will gives rise to CH3CH double bond and NH C6H5 so this is phenyl hydrogen. We will get phenyl
हाइड्रोजन तापरे फर्दर रही टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल आड़ को जब रिएक्ट देखा बहुत सुंदर हेमरश्मि SCHO सब हाइस्ट हम SCHO तापर आसो आमर CH3CHO तापर CH3COCH3 एसीटोन स्टेट एंड एक्सप्लेन Faraday's laws of electrolysis first law second law explain करिवो what is first law what is second law then it first law related गोटे problem रही 0.5 ampere of current is passed through copper sulfate solution for 30 minutes calculate the mass of copper deposited at cathode so ये तुम्हारा कौन रही I रही 0.5 ampere T रही 30 minutes that is 1800 सेकेंड ठीक अच्छे मास ऑफ कॉपर के तो पचरा बस सो आम जो देखा W is equal to EIT by 96,500 ये हूँ आम कपर सल्फेट माने कपर इक्विवेलेंट मास हूँ 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू I केते I is 0.5 into 1800 1800 divided by 96500 तो याको सॉल्व कले 5 कले 0.1 डिवाइडेड बाय मुझे कैलकुलेटर न काटी टाइम पड़ेगा 0.5 into 0.1 divided by into 18 divided by 2 divided by 193 so 0.296 by 0.3 gram even if you write it as 0.3 gram it is quite good hey toxic 777 आसिला टॉक्सिक 777 तुमको एबे पूरा बैन कर देबी रोह बाबा किसी असुविधा नहीं पूरा बैन कर देबी तुम जमा करनी ठीक अच्छे टॉक्सिक 777 कहीं ना एमती कौच क्या हाई बाय कर तुमको पूरा बैन कर देवी पाठ पढ़ा को आस पढ़ पूरा बैन कर दे यही सब क्लास भितर नो डिस्टर्बेंस बाबा ठीक अच्छे क्लास भितर नो डिस्टर्बेंस ओनली तुम ना कौन टॉक्सिक 777 ना कौन तुम टाइम वेस्ट होची पिलांगर भी एग्जाम टाइम रे आमे केते सीरियसली पिला पढुछन आमे समस्त पढुछु ई आसी ए सब जिंस फास्ट लगे छी कोन दबना जीत प्रकाश कहबो डायरेक्ट कहा को भी हाई बाय करबा कि दरकार नहीं ओके सुश्री किसी ना जदि को पिला बेसी हैरान करछि ता नंबरटा दब आउ से पिलार नंबर कौन करवा आम डायरेक्ट साइबर रे पकई दबा तमे तो जानिछ हमर तळ दिन गोटे पिला एभलिया डिस्टर्बेंस करथिला आ ताको थाना को नै हाला से जेल रे 3 वर्ष कटिला कारण गोटे पिलार गोटे झियोटे हारासमेंट पकई देला माने पिला गला बर्बाद करियर से पिलार 3 वर्ष रे लागिला पिलार कलंक लगिगला दागरे से कभी भी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर परिबन जानिछ तो तेणु तुम टेंशन नहीं भगवान ये से ताकत नारी मानक
आमर आईन भी से भाया दृढ़ अच्छी टिके कई मिस इनफॉरमेशन हो बा किसी भी मिसलीड कर मिसबिहेवियर कर सीधा डायरेक्ट से ना आम कंप्लेन लॉन्च कर तो साइबर बहुत एडवांस हो गला माने जो मैंने ये काम कर धरी भी हो छाड़ आमर ए गप करार ना आमको पढ़ार अच्छी ये गला आमर ये आसला 0.3 ग्राम तापर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन आमको डिराइव करार अच्छी तापर डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ log a minus x versus t log a minus x versus t जो हम देखा ग्राफटा स्ट्रेट आसो ठीक अच्छे विथ ये भाया ग्राफ आसो एक्सप्लेन कर कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर 75% completion of a fast order reaction if the half life is 30 minutes तो यहाँ फॉर्मूला अनुसार t 75% is equal to 2 into t half that is 30 into 2 that is 60 minutes आसो lanthanoid contraction कौन lanthanoid contraction होची कौन ना तुम lanthanoid रो साइज ग्रेजुअली डिक्रीज हुए जना पड़ेनी बट डिक्रीज हुए रीजन कौन रीजन होची तुम ड्यू टू screening of f orbital and increased number of gradual increase in number of f electron and nuclear charge that is the reason consequence जो हम देखा consequence रे basic property गोटे रही consequence रे रही हमर तुम्हारा size of second and third element are remaining come nearly same ठीक है these are the reason La3 plus is more stable than Lu3 plus that's why lanthanum hydroxide is more basic than deuterium hydroxide तापर नेक्स्ट आछे हमर राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय डोज प्रोसेस क्लोरोबेंजीन रो फिनॉल केमती प्रिपेयर करिवो का सहित NaNO2 सहित रिएक्ट करले दबो पुनी फिनॉल कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्ट कले तुमरो सल्फोनेशन देखिबो एसिटाइल क्लोराइड सहित रिएक्ट कले इन प्रेजेंस ऑफ aqueous NaOH तापर पारानाइट्रोफिनॉल फिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल NaOH अच्छा क्लोरोबेंजीन को NaOH डाले से अनुसार तापर मिथाइल ब्रोमाइड हफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन गाब्रियल थालमाइड सिंथेसिस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन बाय हिंसबर्ग रिएजेंट देखिबो बेसिसिटी ऑर्डर रे इथानामाइन मिथानामाइन एनिलीन सब लास्ट रे जीवो मिथानामाइन आगो तापर इथानामाइन तापर डिस्क्राइब द टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड हाइड्रोलिसिस फिनॉल को जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट HNO3 माने तुम्हारा सल्फोनेशन नाइट्रेशन क्लोरोफॉर्म सहित रिएक्ट कले कौन प्रोडक्ट दबो एगुड़ा सब ने करिकी रखिबो बोली आशा और विश्वास होप आज एटा डिस्कशन हो गला तो आज संध्या बा राति भितर तुमरो टोटल रिजल्ट आसी जीवो ऑलरेडी किछि रिजल्ट ऑलरेडी हम करगत हो चलेनी स्कॉट एंड बाउंड रिएक्शन अच्छा थैंक यू हिमरश्मि मोर भी मन नहीं हमें टिके देखियो पड़ो सेक्शन रा EFG अब टाइम भी नहीं यू कैन गो अकॉर्डिंगली ओके थैंक यू चलो गुड नाइट कोच हैव ए वंडरफुल डे आम इवनिंग 4टा बेले आज क्लास करवा MIL रो 4टा बेले MIL रो क्लास करवा MCQ क्वेश्चन लेके आसीबा MIL ओडिया समस्ते पढ़ी रही पूरा फुल पेज रे प्रिपरेशन करवा ओके थैंक यू फॉर जॉइनिंग।